गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर एस्पिरेंट। सभी अभ्यर्थीगण को मेरी ओर से शुभ संध्या। इट्स 7:30, 7:30 बज चुके हैं। अब आइए चले आज का ये संध्याकालीन प्रसारण की शुरुआत करें, जिसमें एमसीक्यूज के माध्यम से हम प्रश्नों पर आपका अभ्यास कराते हैं। जो प्रश्न यूपीएससी 2026 के साथ साथ जो स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हैं उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। Consider the following statements with reference to the recently constituted National Medical Commission, NMC. Recently constituted National Medical Commission. Now the statements. परशुराम कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग। और काफी खुशी है कि आप प्रत्येक दिन समय पे उपस्थित होते हैं। सो प्रभु से प्रार्थना है कि आपको सफलता मिले। और समिंदर सिंह जी भी आ गए, तो गुड इवनिंग। सो डियर एस्पिरेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल मेडिकल कमीशन, NMC. This has been recently constituted. Now the statements. Number one, it is a statutory body whose members are appointed by the central government. Is it fact? Now, second, it lays down the policies and codes to ensure the observance of professional ethics in medical profession. And the third statement, it assesses the requirements in human resources for health and healthcare infrastructure. So, dear aspirants, which of the statement given above are correct? A, 1 only, B, 2, 3, C, 1, 2, and D, 1, 2, and 3. So, National Medical Commission. So, dear aspirants, all the statements are correct. So, our answer should be D. हमारा उत्तर क्या होगा? डी होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन which replaced the National Medical Council is a statutory body, okay, which is constituted under Section 3 of National Medical Commission Act 2019. The chairperson and part-time members are appointed by the central government on the recommendation of the search committee chaired by cabinet secretary. So dear aspirants, first statement is correct, and let us have another important question. And this question relates to, with reference to the administration of Vijayanagar Empire, consider the following statements. So this question relates to history segment. Dear aspirants, with reference to the administration of the Vijayanagar Empire, consider the following statements. Number one, the provincial governors were always appointed from royal princes. Second, the office of Nayak, military chiefs, became hereditary, वंशानुगत। अब जैसे कि बिहार में अभी जो चल रहा है, नीतीश कुमार जी अब नहीं है, अब बहुत सारे लोग निशांत कुमार जी को बना दीजिए, तो दिस इज हेरेडिटरी, वंशानुगत। अब ये राजशाही नहीं है, ये प्रजातंत्र है, और उन्होंने तो कोई चुनाव भी नहीं लड़ा है। तो ये मांग क्या न्यायोचित है? और पुत्र ही को क्यों? एक सामान्य जो कार्य करता है उसको क्यों नहीं चांस मिलेगा? तो डियर एस्पिरेंट्स, द प्रोविंशियल गवर्नर्स वेर ऑलवेज अपॉइंटेड फॉर रॉयल प्रिंसेज, और सेकंड, द ऑफिस ऑफ नायक मिलिट्री चीफ्स बिकेम हेरेडिटरी, और थर्ड स्टेटमेंट, अंडर देयर रूल the Chola traditions of local self-governing institutions were expanded and got strengthened. So which of the statement are correct?
A12, B2 only, C13 and D123. तो काफी ये क्रिटिकल क्वेश्चन है डियर एस्पिरेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट because the provincial governors were not appointed from royal princes. Okay, royal princes. The second statement is correct because the nayak or military chief became hereditary. The third statement, okay, under their rule the chola tradition of local self govern, no. So our answer is B, that is 2 only. केवल दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट. तो इस प्रकार से आइए देखें एक और क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक पॉलिसीज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ब्रिटिश रूल इन इंडिया. अब भारत में जो ब्रिटिश रूल है उसका इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीति, उस पर एक सवाल. और स्टेटमेंट नंबर 1, द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी रिजल्टेड इन द रूइन ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडियन सोसाइटी. रूइन ऑफ फ्यूडलिज्म, ओके, इन इंडियन सोसाइटी. बिल्कुल गलत. बल्कि फ्यूडलिज्म की ही शुरुआत उन्होंने कर दी. जमींदारी, पहले कुछ भी नहीं था जमींदारी. साक्षी, वेरी गुड इवनिंग. So, dear aspirants, the British economic policy resulted in the ruin of feudalism in Indian society. This statement is not correct. Second, cultivation of crops like opium and oil seeds increased. This is correct. अफीम की खेती और तिलहन की खेती ये बड़े पैमाने पर प्रारंभ हुई. Third, number of people depending on agriculture decreased due to exploitation under the land revenue system. So, dear aspirants, ये ठीक नहीं है. क्यों नहीं है? This statement is also not correct because कृषि पर बोझ बढ़ गया. कृषि पर बोझ बढ़ गया. Okay, what was India pre-Britishers? India was, okay, सोने की चिड़िया कही जाती थी. क्यों? हैविंग वेल इस्टेब्लिश्ड इकोनॉमी, बूमिंग इकोनॉमी, इकोनॉमी एट इट्स जेनिथ, डियर एस्पिरेंट्स. और ऐसा क्यों? बिकॉज एवरी हाउस होल्ड वाज ए मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, प्रोडक्शन सेंटर. हर हाथों के द्वारा कुछ न कुछ उत्पाद किए जाते थे. अब जब हमारे हैंडीक्राफ्ट कोलैप्स करने लगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, बड़े पैमाने पर यहां के रॉ मटेरियल ले जाकर के इंडिया को मार्केट बनाने की स्थिति में ब्रिटिशर्स ने डाला, बल्कि बना डाला. तो वैसे में नंबर ऑफ पीपुल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिक्रीज्ड, नो, इट इंक्रीज्ड. सो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो नॉट करेक्ट. Dear aspirants, what should be our answer? C. 2 is the answer. First, A 13, B 23, C 2 only, and D 123. Our answer should be C. Second statement is correct. Cultivation of crops like opium and oil seeds increased. So, dear aspirants, during the British rule, the structure and operation of Indian economy were determined by interest of the British economy. Deindustrialization led to decline of many cities and a process of ruralization of India. Many artisans faced with diminishing returns abandoned their professions. अपने अपने कामों को उन्होंने त्याग दिया. Moved to villages and looked to agriculture. गांव में चले गए और वहां से कृषि को उन्होंने अपना व्यवसाय अपनाया, पेशा अपनाया. This resulted in increased pressure on land. Hence, there was an increased dependence of population on agriculture, which was a major cause of poverty. Dear aspirants, so okay,
third statement is not correct, as well as the first statement is also not correct. Let us move to the next question, and here we have, consider the following statements with reference to allotment of party symbols. Pratik चिन्ह, party symbols. Number one, allotment of symbols to political parties is governed by the provisions of the Indian Constitution. Is it fact? Second, Election Commission acts as a court for setting disputes related to allotment of election symbols. Dear aspirants, आज ही के दिन जालियांवाला बाग का कांड हुआ था. Today is 13th of April. I was waiting for Mr. Vicky Singh from Punjab, लेकिन अभी वो नहीं आ रहे हैं, नहीं आ पाए हैं, और लगभग 7:45 के आसपास हम लोगों का समय हो चुका होगा. तो अगर वो नहीं आते हैं तो क्यों नहीं हम जालियांवाला बाग में जो दिवंगत हुए, काल कवलित हुए, बलिदानी उन्होंने दिया देश की स्वतंत्रता के लिए, उनके प्रति नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करें. डियर एस्पिरेंट्स, और कल अंबेडकर जयंती है. 14 अप्रैल, 14th of April every year is celebrated as अंबेडकर जयंती. और संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरपर्सन थे, और उन्होंने काफी संघर्ष भरा जीवन जिया, और एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई. डियर एस्पिरेंट्स, समाज में जो दबे कुचले हाशिए पे जो लोग हैं, उन्हें भगवान समझते हैं, भगवान से कम नहीं समझते. डियर एस्पिरेंट्स, consider the following statement with reference to allotment of party symbols. Number one, allotment of symbols to political parties is governed by the provisions of the Indian Constitution. भारत के संविधान के प्रोविजंस के अनुसार. और सेकंड, इलेक्शन कमीशन एक्ट्स एज ए कोर्ट, न्यायालय की तरह, फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू allotment of election symbols. Which of the statement given above is are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, and D neither 1 nor 2. अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है या. डियर एस्पिरेंट्स, करेक्ट आपको स्टेटमेंट बताना है. बी इज द आंसर. ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. इलेक्शन कमीशन एक्ट्स एज ए कोर्ट, न्यायालय की तरह निर्वाचन आयोग कार्य करता है फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, उन विवादों के निपटारा के लिए, रिलेटेड टू अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स, ऐसे विवाद जो उत्पन्न होते हैं प्रतीक चिन्ह, ओके, सिंबल, आवंटन से संबंधित. सो डियर एस्पिरेंट्स, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ड्यू टू हाई इलिटरेसी रेट्स, India's election commission historically has assigned visual symbols to political parties to help voters identify their candidate of choice. These symbols also help the several unrecognized parties and independent candidates differentiate themselves from one another and help voters identify the party of their choice. Dear aspirants, the election symbols reservation and allotment order, first promulgated in 1968, mandates the election commission to provide for specification, reservation, choice and allotment of symbols at parliamentary and assembly elections for the recognition of political parties. So the first statement is not correct because it is not governed by the Indian Constitution. So, dear aspirants, let us move to the next question. And here we have, consider the following statement with reference to the recently constituted, okay, dear aspirants, and this question I have already taken, National Medical Commission. इस क्वेश्चन को हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर लिया है, और आगे चलते हैं डियर एस्पिरेंट्स, जिसमें
ऐसे प्रश्नों पर हम विचार करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्व के हैं। तो आइए चले एक दो और प्रश्न हम ले लेते हैं डियर एस्पिरेंट्स। ऐसे ही प्रश्नों के सहारे आपकी परीक्षा में सफलता सुनिश्चित हो सकेगी। तो डियर एस्पिरेंट्स, आपने अपनी तैयारी को काफी आगे बढ़ाया होगा, और जो भी डियर एस्पिरेंट्स विथ रेफरेंस टू दी ओके, परशुराम जी, साक्षी जी और समिंदर जी, केवल 3 ही लोग हैं, तो और भी लोग आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। और आइए चले तब तक ओके, और प्रश्नों पर हम विचार कर लेते हैं। यस डियर एस्पिरेंट्स, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट GFRA 2025, this is also hot topic. In with reference to global forest resources assessment 2025, consider the following statements. कभी कभी क्वेश्चन बनाने में ओके, लैंग्वेज में थोड़ी बहुत हेर फेर होती है, लेकिन आप उसे समझ सकते हैं। नंबर 1, एज per the report, the net loss of forest area has been reduced by more than half since 1990s. ये परीक्षा IAS, IPS, IFS और अदर सर्विसेज के लिए भी होती है। तो क्वेश्चंस तो निश्चित रूप से, अब इन्वायरमेंट का जो सेगमेंट है वो स्पेशली इन्हीं के लिए है। लॉ एंड ऑर्डर, सोशल डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, ट्राइबल्स इन इंडिया, ऐसे IPS के लिए है डियर एस्पिरेंट्स। IR, इंटरनेशनल रिलेशन, IFS के लिए है, इंडियन फॉरेन सर्विस, और सभी की ये इंटीग्रेटेड एग्जाम है UPSC। तो आइए चले ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट, एज पर द रिपोर्ट, प्रतिवेदन के अनुसार, द नेट लॉस ऑफ फॉरेस्ट एरिया हैज बीन रिड्यूस्ड बाय मोर देन हाफ सिंस द 1990s. Second, of the regions, Europe has the largest forest area, accounting for 25% of world's total, dear aspirants. And third, India is placed in top 3 with an annual forest area gain. How many of the above statements are correct? A only one, B only two, C all 3, and D none. So, तब तक आप खोजें ओके, और इसका आंसर बताने की चेष्टा करें डियर एस्पिरेंट्स। अब यहां पे all 3 statements are correct. All 3 statements are correct. Dear aspirants, forest cover more than 4 billion hectares, nearly half of which is in the tropics. The world has a total forest area of 4.14 billion hectares, which is close to 1/3, 32% of the global land area, and equivalent to 0.50 hectare of forest per person. The tropical domain has the largest proportion of the world's forest, 45%, followed by the boreal, BOREAL, temperate and subtropical domains. Of the regions, Europe has the largest forest area, accounting for 25% of the world's total, dear aspirants. तो ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के सहारे हमारा आंसर बनता है C, all the 3 statements are correct. एक बार फिर से स्टेटमेंट जो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, ज्ञान में वृद्धि करेंगे। नंबर 1, एज पर द रिपोर्ट, द नेट, which report
GFRA, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट। डियर एस्पिरेंट्स, एक बात हम पूछेंगे, इस क्लास से आपको कितना परसेंट लाभ हो रहा है? इफ यू आर बेनिफिटेड, व्हाट इज द परसेंटेज? आप 10 में हमें कितना मार्क्स देंगे? ओके, जो आपकी कंसिस्टेंसी को बना रहे हैं, आपके पास वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हम ला रहे हैं, ढूंढ ढूंढ करके आपको सुना रहे हैं। सो आउट ऑफ 10 व्हाट इज माय स्कोर? आप बताएं। 10 out of 10. Mr. Harish Chaudhary, for the very first time you are joining my class and you are giving me 10 out of 10. So thank you. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर हरीश चौधरी 0001 301। So we are discussing GFRA, Global Forest Resources Assessment. And according to this assessment 2025 report, as per the report, the net loss of forest area has been reduced by more than half since 1990s. और अब एक और है नैनो गेम। गेम नाम पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। 11। अरे बाप रे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय डियर, थैंक यू। So all the three statements are correct. Of the regions, Europe has the largest forest area, accounting for 25% of world total, and India is placed in top 3 with an annual forest area gain. अब आप यहां पूछेंगे इंडिया नंबर 3, who is number 1? Number 1 is China, number 2 is Russia. So dear aspirants, अब this is okay. Consider the following statements. Number 1, metal organic frameworks are highly porous materials with extremely large surface area. Now you have to investigate into this statement and find out the correct answer. Second, metal organic framework are a class of 3D material that are made up of metals connected by organic MOF ligands. Dear aspirants, critical minerals already had your classes sometime back. Oh, wonderful, wonderful, great. So, अब नाम ऐसा ऐसा है जो हम याद नहीं कर पाते हैं। सो नैनो गेम री आउ गेमरी, नो गेमर, ओके, नैनो गेमर यूट्यूब। Yes, I can pronounce it. Very good, very good. नैनो गेमर यूट्यूब। तो ऐसे ऐसे नाम हैं जो पहचान को छुपा देते हैं। जरूरी भी है साइबर क्रिमिनल्स बढ़ चढ़ करके, ओके, और इस प्रकार से जब ऐसे ऐसे नाम नहीं रखे जाएंगे तो पहचान तो ऐसे ही अस्पष्ट हो जाएगी, और अस्पष्ट पहचान ही खतरे की घंटी है। सब कुछ जोखिम भरा है। विज्ञान के जितने भी अनुसंधान हैं सारे के सारे जोखिम भरे हैं डियर एस्पिरेंट्स। और आइए चले थर्ड स्टेटमेंट। 2025 Nobel Prize in Chemistry has been awarded to scientists for their work on metal organic frameworks, often called MOF. Oh, Ali Patil, you are also in my WhatsApp group. आप तो मेरे WhatsApp ग्रुप में भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और which of the above statement is correct? A 12, B 23, C 13, and D 123. So dear aspirants, all the statements are correct. Our answer should be D 1, 2, and 3. 2025 Nobel Prize in Chemistry has been awarded to, okay, dear aspirants, the Japanese scientist and Australian scientist, and metal organic framework, that is MOF. So let us move to the next question, and this question relates to polity. Consider the following statement regarding the powers of the Rajya Sabha. राज्यसभा की शक्तियों पर ये एक सवाल।
So, dear aspirants, number one, you can authorize Parliament to legislate on a state list. It can authorize Parliament to legislate on a state list subject by passing a resolution supported by not less than two-thirds of members present and voting. The second statement, such a resolution remains in force for 1 year and can be renewed any number of times. Dear aspirants, the third statement, laws made under such a resolution cease immediately after the resolution expires. So, which of the statement given above is are correct? A12, B13, C23, and D1, 2, and 3. So, dear aspirants, the answer to this question is A, that is first and second statements are correct. Third statement, laws made under such resolution cease immediately after the resolution expires. This statement is not correct. Okay, because a law made by Parliament under such a resolution does not cease to have effect immediately upon the expiry of the resolution. So, dear aspirants, you should also, okay, note it down, Article 249, okay, related question. Let us move to the next question. The government has notified the first legally binding greenhouse gas emission intensity GEI target rules 2025. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Dear aspirants, please note it down. Please note it down. The government has notified the first legally binding greenhouse gas emission intensity target rules, 2025 for high emission sector. How many of the sectors are included? Number one, aluminium. Number two, paper and pulp. Number three, cement. Number four, rubber. Number five, plastic. Number six, where, okay, chlor-alkali. Select the correct code. A, only 2, B, only 3, C, only 4, and D, only 5. What should be the answer? Dear aspirants, rubber and plastic are not there. So we have to include only 4. Okay. So only 4 out of 6, 2 should be excluded. That is rubber and plastic. In 2025 notification, only 4 sectors are mentioned. Okay. Maybe later on, some other sectors will be included in phased manner. But for now, only these 4 are there. Okay. So, dear aspirants, please note down the important topics. Next question. With reference to the Crime in India Report 2023, consider the following categories of crime. Number 1, crime against women. Number 2, crime against children. Number 3, economic offenses. Number 4, cases under Prevention of Corruption Act. And 5, cyber crimes. Which of the above categories recorded an increase in the number of cases in 2023 as compared to, okay, the previous year? Select the correct code. A, 1, 2, 3, 5. B, 2, 3, 4, and 5. C, 1, 3, 4, and D, 1, 2, 3, 4, 5. Dear aspirants, if you are not knowing the answer is A, 1, 2, 3, and 5. Cases under Prevention of Corruption Act, okay, C बता रहे हैं 1, 2, 3, and 5. This is the answer. So, dear aspirants, let us move to another question. Next question, I should say. Consider the following statements. Number 1, Ministry of Home Affairs is the nodal ministry and the central authority for seeking and providing mutual legal assistance in criminal law matters. Second, for non-criminal legal assistance, the Ministry of External Affairs
acts as the nodal agency. Here you have to examine the statement. The third statement, in 2026, this year, India signed an MLAT in criminal matters with Mozambique and Nepal. Which of the above statements are correct? Dear aspirants, A 1 B 1 3, C 2 3, and D 1 2 3. The answer is B 1 and 3. For non-criminal legal assistance, the Ministry of External Affairs, this is not correct. So, second statement is not correct. Dear aspirants, as per the allocation of business rules of the Government of India, Ministry of, yes, Parsuramji, this is thumbs up for your correct answer. Ministry of Home Affairs is the nodal ministry and the central authority for seeking and providing mutual legal assistance in criminal law matters. The Ministry of Home Affairs, MOHA, receives all such requests, examines them, and takes appropriate action. Dear aspirants, the second statement is incorrect because it is Ministry of Law and Justice. Okay, so now let us move to the next question. The Central Pollution Control Board, CPCB, Central Pollution Control Board, in its recent assessment report on polluted river stretches based on data from 2022 and 2023, identified polluted locations using which of the following basic criteria? A. Dissolved oxygen falling below the prescribed limit. B. Chemical oxygen demand exceeding the permissible limit. And C. Biochemical oxygen demand, BOD, exceeding 3.0 mg/L. D. Total dissolved solids, TDS, exceeding the permissible limit. So what should be the answer? Dear aspirants, if you are not knowing, C is the answer. Biochemical oxygen demand, BOD, exceeding 3.0 mg, okay, per liter. The Central Pollution Control Board, in its recent assessment report on polluted river stretches based, okay, C is the correct answer, Mr. Parशुराम जी, बहुत अच्छी बात है. तो इस प्रश्न को भी आपने लिख लेना है. अब एक assertion or reason. Consider the following statements. Assertion: smog eating photovoltaic coatings can reduce nitrogen oxide in urban air. Is it correct? एक बार फिर से. Smog eating photovoltaic coatings can reduce nitrogen oxide in urban air. और रीजन क्या है? R. These coatings use titanium dioxide, which under sunlight generates reactive species that oxidize pollutants. Dear aspirants, select the correct answer. A, both A and R are correct, and R is the correct explanation of A, and this is the correct answer. A is the correct answer. एक बार फिर से सुनेंगे और नोट भी करेंगे. स्मॉग ईटिंग photovoltaic coatings can reduce nitrogen oxide in urban air. Or region, these coatings use titanium dioxide, which under sunlight generates reactive species that oxidize pollutants. Dear aspirants, our answer should be A. Both A and R are correct, and R is the correct explanation of, okay, A. So, dear aspirants, आइए चले. Which European country has seen the appointment of 5 prime ministers in quick succession between 2024 and 2026 due to a persistent budgetary and legislative impasse? Dear aspirants, A. Australia,
B. Sudan, C. Thailand, and D. France. Are you able to name the country जहां पे 5 प्रधानमंत्री 2024 से 26 के बीच पदस्थापित हुए हैं? So what should be the answer? The answer is D. France. The answer is D. France. Dear aspirants, आज का आखिरी सवाल आज का दी बायो सिग्नेचर, नोट कर लीजिएगा, ए बायो सिग्नेचर was recently reported in samples collected by the Perseverance rover from JJ Roe crater. In this context, what does the term biosignature signify? Biosignature का मतलब क्या है? A. Definitive proof of presence of life. No. B. A substance or feature that may indicate a biological origin but requires further confirmation. This is the answer. बायोसिग्नेचर का मतलब क्या होता है? बायोसिग्नेचर का मतलब यही होता है. So dear aspirants, all together we have discussed 10 to 15 questions today. So let us hope more than this in coming days. Okay, so let us meet tomorrow at 7:30. और जिन जिन को व्हाट्सएप नंबर लेना है, हियर इज द व्हाट्सएप नंबर 9934739191 9934739191. So thank you for joining me in such a good number, dear aspirants. Let me say good night to all of you. Bye bye.